सो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि लाइब्रेरीज ऐड होना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये दो लाइब्रेरीज का बंडल है, इसको ये ऐड कर लेता है। फर्स्ट वन डेफिनेटली वी नीड जेडीके। सो यहाँ पे जेडीके ऐड कर लिया है। एंड डेफिनेटली सेकेंड इज द ग्लासफिश सर्वर, जो कि एज ए सर्वर वी रिक्वायर्ड। एंड विद इन दैट ग्लासफिश सर्वर जो भी हमको पैकेजेस चाहिए होंगे, जैसे सर्वलेट है, जेएसपी है, इससे रिलेटेड पैकेजेस जो भी रिक्वायर्ड है, वो पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। So these two libraries are the basic requirement, and then if any additional library is required, we need to uh, plug in that library or we need to set the references. So यहाँ पे पहले से दो library already added है, और this is the configuration file and where all the configuration file can be kept, जैसे web.xml file हम लोग बना के यहाँ पे रख सकते हैं। all that जो भी है उस तरह से यहाँ पे हम लोग अगर configuration file की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ हम लोग बना के रखेंगे। And this is the source package where we can create the servlet file, and this is the web pages where we use to create the HTML file and JSP file. तो ये अलग अलग फोल्डर्स है जो कि इस प्रोजेक्ट हायरार्की में, या से बोलो कि इस प्रोजेक्ट ये एक वेब प्रोजेक्ट है, और वेब प्रोजेक्ट में विद इन फोल्डर वी हैव टू क्रिएट सम सर्टेन फोल्डर दैट विल कीप द कलेक्शन सिस्टम ऑन। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे कलेक्शन सिस्टम मेंटेन करना होता है, ताकि मेरा जो फाइल है वो एक फोल्डर में रहे। तो उस तरह से ये पहले से मेरे को फोल्डर क्रिएट कर देता है। यहाँ पे वेब पेजेस फोल्डर दैट विल कीप ऑल द HTML and JSP pages. This is the source package folder where we can define our packages also, and we can keep servlet within that package. And that then this is the library folders where all the library kept under. And this is the configuration file. We need to add all the configuration file within this folder. And if we require additional folder, we can create it within the web pages, within the source package, wherever we require, we can create it. Accordingly, we have to maintain a collection system, because without collection system यहाँ पे जो फाइल्स होंगे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमको हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के फाइल रखने पड़े, CSS के फाइल रखने पड़े, तो हम लोग वेब पेजेस के अंदर क्या करेंगे ना, यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे कि जितना भी CSS फाइल है, मे बी मल्टीपल CSS फाइल कैन बी यूज इन माय वेबसाइट, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज इन माय वेबसाइट। सो वी विल कीप मेकिंग फोल्डर और वी विल कीप मेकिंग कलेक्शन ऑफ दैट ना। तो कलेक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग डायरेक्टरी और फोल्डर। सो वी कैन क्रिएट एडिशनल फोल्डर ऑल्सो, बट राइट नाउ हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं कि हमको एक सर्वलेट क्रिएट करना है। एंड सर्वलेट क्रिएट करने के लिए वी कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, और वी कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज फोल्डर। सो वी हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक and then new and then servlet. So this will ask me, yes सर, ये वेब INF करके जो फोल्डर है उसमें क्या होता है? वेब INF, इसमें आपका रन टाइम जो भी रन टाइम फाइल्स जनरेट होंगे ना, वो इसमें आ जाएंगे। अभी हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे तो इसमें जो भी टेम्पोररी फाइल्स होते हैं वो इसमें सेव होते रहते हैं वेब INF फोल्डर। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक सर्वलेट एंड वी कैन नेम इट द सर्वलेट, जो भी नाम रखना चाहते हैं। दिस इज एक्चुअली द क्लास फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ जावा फाइल एक्चुअली। तो जावा फाइल का जो भी नाम लिखें, that Java file we have such a servlet। तो यहाँ पे हम my servlet ऐसा कुछ नाम देते हैं, and that is going to be created within the source package, that is the default package also, and this is the actual location where this particular servlet file is created. So see, the actual location is project folder, within that src folder, within that Java folder, and within that my servlet.java. This is the name of my file. Actually the .java is the extension, so this is going to be the extension of my servlet file. So we will click on next, and यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट पाथ पूछ रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट पाथ आपका स्वाभाविक है यही रखना पसंद करेंगे।
एंड अगर आप web.xml फाइल में इसका एंट्री करना चाहते हो तो ये चेक करना पड़ेगा, फिनिश. So see that web.xml file is created right now and see the mapping is done over here. So अगर आप manually काम करते हो तो ये सारा task you have to do it. So you need to learn all the tags. This is the XML tags and this is the XML based file. So XML के सारे tag होंगे जिसमें कि आपको configuration maintain करना पड़ता है. तो ये जो है ये automatically IDE में लिखा जाता है. So this is the web.xml file जहाँ पे settings stores हो रहे हैं and this is what your servlet file is look like. So whatever we discussed earlier in the theory portion that will be covered in this practical session. So see the packages which are important and that is already important. So यहाँ पे IO पैकेज इंपोर्ट हो रखा है, सर्वलेट पैकेज इंपोर्ट हो रखा है एंड विद इन दैट सर्वलेट और विद इन दैट IO पैकेज स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है. अगर आप स्पेसिफिक नाम जानते हो क्लास का तो यू कैन नो राइट इट और कॉल इट. Otherwise we can also do it by the wildcat character that is asterisk. So basically most of the cases we used to write asterisk, but in the some cases where we do not require all the classes and all the interfaces to be referenced, then we call with the particular name. So what are the classes that is used within the IO package? There is IO exception class and second is the print writer class, and within the servlet package that is servlet exception class, and within servlet another package is there that is HTTP, and within that HTTP servlet class, HTTP servlet request class and HTTP servlet response class. So see these three classes are important. This servlet class will make your particular class as a servlet. This class is used for getting requests from the client and this class is responsible for getting response to the doing response to the client, right? So ये तीनों क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद रखना भी पड़ेगा कि किस क्लास से क्या काम हो रहा है और ये किस पैकेज से आ रहा है. तो this HTTP servlet class belongs to java x.servlet.http package, right? And within that package the another two class also belonging, that is HTTP servlet request and HTTP servlet response. So we have to make the object of request and response accordingly. So see the first line, this is the class declaration line. Until here you know it very well, and after we used to write extends, that means that is going to be inherited, and which class is inherited, that is HTTP servlet class. So HTTP servlet class, when we inherit HTTP servlet class, that my class now becomes a servlet class, and all the lifecycle behavior or all the function which is written over there that can belongs to my class now. So now my servlet is not a simple Java file, it's a servlet Java file. So all the life cycle and all the processing environment will already bring there because of inheritance. So we have learned that whenever we inherit, all the characteristics of parent class is not shared with the child class. So this class is child class now. So my class belongs to one child class and the parent class is HTTP servlet class. So this servlet class provides all the functionality of a servlet. So now see, so process request for both HTTP GET and POST method will be done. We have request, we have response, we have servlet exception, we have IO exception. So all are commented, written and commented to acknowledge you ki whatever the particular code is going to do, that is written over here. Kya karne ja raha hai code ye. Now see, the one function is already defined and that is called process request function. And this process request function having two parameters and throws two exceptions accordingly. So first parameter, that is request parameter, definitely because we have to get the request from our client or user who is requesting to particular page and particular file. And then the second parameter is HTTP servlet response, that is response. इसका एक object बना हुआ है. So पहले क्लास का ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट एंड दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है रिस्पांस, एंड यू कैन से द वेरिएबल.
So this is a object variable, दोनों variable created है, and this will going to throw servlet exception because servlet class is there, and IO exception because IO class is also be there, because we need here IO operations. Now, how do we response that is mapped to your response? So response का एक method है that is called set content type. With the help of this set content type, we have to set that what we are going to response. So definitely we are going to response text file as a HTML file. ठीक है, मतलब हम लोग एक टेक्स्ट फाइल भेजेंगे जो कि HTML फॉर्मेट में होगा, और कैरेक्टर सेट बाय डिफॉल्ट इसका UTF-8 रहता है. If you want to change, you can change. And now we have to responses with the help of writer class. So we have one object that is out of the print writer class. So print writer class का एक ऑब्जेक्ट बना है जो कि किसके साथ मैप है? देखो, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ मैप है. मतलब हम जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो आउट के साथ करना है. So see, ये कुछ पूरा रिस्पॉन्स होने जा रहा है. So if I use out.println, that means that this out object is mapped to the response, and this response is mapped to that particular reference to this HTTP subject response class. So there is a hierarchy of references, and you can see the pointer to pointer references that will taken care over here. So this out object is mapped with the response dot get right. मतलब जो भी हम रिस्पॉन्स को देंगे वो आउट के साथ देंगे, एंड आउट क्या करेगा? इसको राइट करेगा. कहाँ राइट करेगा? तो उस चैनल पे राइट करेगा जिस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट आया है. तो जो भी चैनल है उस चैनल पे वो राइट कर देगा. एंड विद द हेल्प ऑफ आउट, एंड वी हैव दैट println फंक्शन जो कि जावा में हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से. system.out.println पढ़े थे. तो system.out.println that is going to be printed on the monitor only. That is your self-working device. But we are here we are printing on the browser of client. So for the printing on the browser of client, we need response object, and with this out object is now mapped with that response object. Na? Right? Got it? Na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So ये जब भी हम out लिख रहे हैं, that means कि it references to response, and this response is going to be written on the browser, and browser going to interpret that, and because this is the HTML content, ये पूरा HTML content हम लोग लिखने जा रहे हैं browser पे. So browser क्या समझेगा? इस HTML content को समझेगा और browser उसको interpret करेगा, and that will show on over the client machine. So out के साथ हमको ये काम करना है. But see, this process request now map, यहाँ पे कुछ hidden code है. See, है, देखो क्या है. ये जो मेथड है ये खुद का बनाया हुआ मेथड हो सकता है. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था, हम लोग पढ़े भी, ये कहीं भी मेंशन नहीं था. तो ये प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है ये इस आईडीई के थ्रू बनाया गया है. ये कहीं भी लाइफ साइकिल का मेथड नहीं है. लाइफ साइकिल का मेथड क्या है? डू गेट, डू पोस्ट, which comes under the services stage. So whenever we call the servlet through get method, then this method is going to be executed. And whenever we call with the post method, then this method is going to be executed. But from any of the method you call, that process request function is going to be called. See, both the places this process request function is called upon. So this process request function is actually this function where we are writing all the codes. So whenever the request comes to this servlet, this request either taken care by the do get function or do post function according to your method written with the request. जिस भी तरीके से रिक्वेस्ट करोगे वो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेगा, एंड वो फंक्शन फिर किसको कॉल करेगा? प्रोसेस रिक्वेस्ट को करेगा, ताकि ये प्रोसेस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो सके जहाँ पे मेरा पूरा प्रोसेसिंग कोड है. तो दैट इज वाई ये हिडन मोड में है. आप यू डू नॉट नीड टू चेंज ओवर दिस फंक्शन. इन दोनों फंक्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करेंगे तो फिर एग्जीक्यूशन का जो फ्लो बना हुआ है वो ब्रेकआउट हो जाएगा. अगर करना
चाहते हो तो फिर पूरे तरीके से आपको कंसिडर करके करना पड़ेगा। जहां भी चेंज करोगे, जहां भी रेफरेंसेस है, उन सारे रेफरेंसेस को चेंज करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि in the initial way you do not change. If you want in advance, if you know everything about that, you can change. But right now there is no need to change this code. We have to concentrate on what? We have to concentrate on this process request function. So within that process request, uh, that response object is mapped with the out object, and out within that out object we have to use the print line function, and within the print line function, within the double quotes, whatever we want to write it. And if we want to use the dynamic coding like this is one of the dynamic coding where we are referencing the variables and all that. So we need to concatenate that variable with the particular tags or whatever we want to put the output. So see, this is one of the function belongs to request object. Request object is of HTTP servlet request. So there is one function that is called get context path. This will fetch the context path of this servlet. So if I am going to run this servlet, then the output is going to be the title, जो कि title bar पे आ जाएगा, and within that body h1 tag is written, and within that h1 tag these are the static servlet, my servlet at, and this is the dynamic, which will fetch the context path which we put when we created that my servlet file. So it will fetch that location. कि context path location इस particular file का क्या है, क्योंकि अभी तो हम सेम रख दिए हैं तो आपको चेंज नहीं, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो। context path कुछ और है, फाइल नेम कुछ और है। सो यहाँ पे context path आपको ये दिखाएगा। सो अगर हम इस पे राइट क्लिक करें, रन फाइल करें, तो इट विल सी, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसी नाम से रन कराना है ना। सो वी विल पुट दिस ओके। This will start your whenever you run first time, this will start your server, all the servers, and then it will publish on the server, and then produces the output within your default browser. So default browser is right now that Chrome is the default browser. You can change default browser from here. Whatever the browser installed within your system, you having the choice to change the default browser. So right now it's Chrome. So it will start with the Chrome. Sorry, Mozilla Firefox. See, all the publication stages are running on the output window. So you just see how this server is started. All the step is written with this ID. We are nowhere. This how much command is required by your server to run that particular application, to publish all the application on the server, and then it will start your Chrome, and then with the help of that URL, that is the default URL for browsing that page or that website, will come over here. See, this is the actual context path. That means this is the project name. So this is the context path where this particular project is running, and there are lots of functions over here. Not only the context path. The dot operator, you will find lots of functions. See, whatever you need, you just check it out कि हमको क्या चाहिए। Accordingly, जिस भी फंक्शन को क्लिक करोगे उसका डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे आ रहा है। अगर तुमको पढ़ के यूज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हो एनीथिंग व्हाटएवर वी लाइक। बहुत सारा फंक्शन है जिसको तुम यूज कर सकते हो। जब भी रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ फंक्शन तो हम भी यूज करके दिखाएंगे, एंड कुछ फंक्शंस आप खुद भी अगर जरूरत पड़े तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन ओवर हियर जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
अभी फिलहाल जो जैसे एक फंक्शन है सर्वलेट पाथ, तो अगर हम ये लिखें सर्वलेट पाथ, सी व्हाट इज द आउटपुट, is the servlet path, right? So you can get anything by using these functions, which is provided predefined, and for additional you have to write the code. So this is the basic information related to a servlet file, and now we used to create servlet file, and we need to collaborate your collaboration between HTML to servlet, HTML to JSP, JSP to servlet, uh, and then again back to servlet to HTML, JSP to HTML, and any way collaboration can be happened. So जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं HTML से सर्वलेट को and सर्वलेट को HTML से and vice versa. So now I'm going to create one HTML file. Let's see, अगर हम इस HTML फाइल का नाम सपोज लॉगिन रखना चाहते हैं, login.html, so we do not need to type over here extension. This will only done by the your IDE. So you just put your file name. Login.html file बन गया. Now with this login.html file, we just use bootstrap or any of the way to design that file. Now only using form tag. I'm not using any design format, just I'm going to show you how it works. So within this form tag we need at least two properties that will work over here. So दो properties यहाँ पे जो mandatory है, first one is method. This is the method, and we have to choose here. जो भी हम method का नाम लिखेंगे वो method यहाँ पे accordingly servlet पे कॉल होगा. तो यहाँ पे हम अभी सपोज पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट मेथड से ये सर्वलेट को कॉल करेगा. एंड सेकंड इज द एक्शन, where this action is going to be happened. So which on the submit button click, on the button click or on the submit button click, which particular file is going to be called upon. So action हमको कहाँ करवाना है? So my servlet पे करवाना है. तो my servlet पे ये action होगा. But my servlet not belongs to the same folder. See, this is the folder where HTML file has been kept, and this is the folder where my servlet file has been kept. So there is a root difference. Root इसका यहाँ है. Root के अंदर दो सब folders हैं, and इस folder को communicate करना है इस folder के साथ. So we need one dot. It will take to the root folder, then it will come to the my servlet folder. So that is the source. And we have to see if any other changes could be required. Now, suppose we have first user ID, and with the help of input tag, input type equals to text, and we need to give the ID of this control, so txtuid, and we have to name this control with the same name, txtuid, because I have given two identifier over here with the same name. So some of the browser can catch this ID properties, and some of the browser can catch name properties. So we have to use both of the properties because I don't know which browser can be used by any user. So you have to do this two naming convention over here, but the value should be the same. Properties is ID and name, but the value should be same. Otherwise, you will be in difficult. Someone say that a particular browser cannot read that properties. So you have to mention both of the properties. Second is password. Now input type. You can choose password, ID, txt, pwd, name, txt, pwd,
we need to fire one break statement because ये एक ही line में आ जाएगा. And then last we need to put one button type equals to submit value equals to login. So see the output of this file. I told you to design these files. If you are anyone having the designed one, you can send me so that I can use that registration and login file. So see, this is the output. Now on the click on this login button, this will fire this servlet. See this. We cannot able to see that. So it's sir. not visible to Not us. visible. You have to share it again. Okay, browser is not visible. Now it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This one also we are not able to see, so servlet also at that Okay. time. Okay. So see, this is the context. This is the variable we have used within that servlet, that get servlet path. So this get servlet path variable get you the servlet name, and with the context path, that this is the basic context path. So with the context path variable, we used to see this folder name. This is the project name also. So right now, with the help of this, we have created one login file, that is login.html, and we put the instruction that when the submit button clicked by the user, this form will fire post method to post the data to which file? To the action file that is called servlet. That servlet file, Servlet. yes, that we have created already. So this is the servlet path where this submit button posts the data when this submit button clicked by the user. And then when we run this file, this login.html file will come, and on the click on this button, what would be the output? That servlet file will be called, and this is the output of that servlet file. Right now, this is the only output. So this servlet file having this is output only. So when we collaborate one HTML file with the servlet file, see how it is collaborated. If you are using PHP, then you have to use this PHP. If you are using .NET, you have to write the .NET file. So any of the file which belongs to your project only, which belongs to your project. See, here we have to take action of that file which belongs to my project. दूसरे प्रोजेक्ट से हम यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं कर सकते. यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट पे ये फाइल होना चाहिए और इसी प्रोजेक्ट का कहीं पार्ट होना चाहिए, तभी ये कोलैबोरेट होगा. दूसरे प्रोजेक्ट से बात करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी होता है, तो उस मेथोडोलॉजी पे जाना पड़ेगा. राइट नाउ वी आर कॉलिंग द फाइल व्हिच रिसाइड अंडर दिस प्रोजेक्ट फोल्डर ओनली. भले वो डिफरेंट फोल्डर के अंदर हो हायरार्की में, लेकिन इसी फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होना चाहिए फाइल. So this is called virtual path, and this is a referential path, or also called this is the absolute path. Absolute path यहाँ पे कॉल हो रहा है, जो कि डॉट ऑपरेटर क्या ले रहा है, मेरे रूट फोल्डर को उठा रहा है, और रूट फोल्डर से फिर ये मेरे को माय सबलेट तक पहुंचा रहा है. तो एक्शन पे यहाँ पे जाकर हम लोग पर्टिकुलर फाइल को कॉल कर पा रहे हैं. तो दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ HTML टू सर्वलेट, क्योंकि एक HTML फाइल से हम एक सर्वलेट फाइल को कॉल कर रहे हैं. Thus, when the servlet file will be called, whatever written within that servlet file, it is going to produce you the output. So now see, अब हम मेरे पास यहाँ पे दो फील्ड है, यानी दो वैल्यू है जो कि इस पर्टिकुलर सर्वलेट पे पोस्ट होगा. So how to get those values? So see how to get those values. Now ये लाइन हम हटा रहे हैं. अब बॉडी टैग के अंदर हमको काम करना है, एंड बॉडी पे हम सपोज पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड स्ट्रिंग यूआईडी करके हम कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, we have one function called get parameter.
and within that get parameter function we have to name that variable which is coming through. So txt uid, this is the name of this variable, this control. So this becomes the variable. So we have to catch this variable value. See, we have catched first field value and second. Suppose this is password. We have to request dot get parameter. Within that txt pwd. So we have cached both the field. Now we have to produce output. So out dot println whatever we have cached. That means if whatever we got request value, just we are printing with the response. Now there is no processing right now. We have to process it in certain way. So right now I am getting the request and posting the request, the response. So यहाँ पे हम लिखते हैं user id ऐसे शो करने के लिए प्लस जो मेरा वैल्यू है, ठीक है. सेकेंड वन now run with this login.html file. We could not run directly servlet file route now because servlet file is supposed to get requests from any of the HTML. So directly we cannot run this servlet file. We have to run from the flow of execution. So flow of execution tells that we need to call this login file first, login.html file. And this file will call internally that servlet file. So suppose user ID is Praveen and password is 123. Click on this login button. See, user ID is Praveen and password is 123. So what we done? We captured that request and we get that request value with the variable which is coming, and this variable having that value. And that value is stored locally with a particular string variable, and after that we just throw it. That means we just request responses that both the variable. So this is the way how do we collaborate HTML file to a particular servlet file. And this servlet file सर्वलेट को डेटाबेस से कैसे करेंगे अगर हमको यही चीज भेजना हो? मतलब अभी बताएंगे, अभी जो बता रहे उसको समझो ना. अभी तो आगे ओके सर. आगे हम लोग देखेंगे डाटाबेस का कि कैसे इसको डाटाबेस तक लेके जाएंगे और फिर कैसे डाटाबेस से जो वापस आ रहा है उसको फिर कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे.